राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धोरिता दे। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धोरिता दे। राधार महिमा प्रेम धान सीमा जगते जानतो के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मोने धोरिता दे. Hare Krishna. Translation. If Lord Gaura had not appeared as the Yuga Avatara in this age of Kali, then what would have become of us? How could we have tolerated living? Who in this universe would have ever learned about the topmost limits of loving mellows that comprise the glory of Sri Radha? Who would have had the power to render ecstatic devotional service that follows in the footsteps of the damsels of Raja? Indeed, the clever expertise of the Vrajagopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrindadevi. Oh, please sing again and again of the glorious qualities of Lord Gauranga. Just try to keep your heart simple. Not even one person within this ocean of nescience has ever seen such a magnanimous personality as he. Even though I chant the holy name of Lord Gauranga, somehow I still have not melted in ecstasy. How then have I maintained the burden of this body? How has the Creator fashioned this body with a stone in place of Vasudeva Ghosha's heart? Hare Krishna. Thank you very much. Please forgive me if I've committed any mistakes. Hare Krishna. Thank you very much for the opportunity. हरे कृष्णा. प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप कनेक्टेड हैं. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद. अपर्णा माता जी, आपका मधुर कीर्तन को बहुत धन्यवाद. बहुत सुंदर कीर्तन किया आप. अभी हमारे साथ हिज होलीनेस कविचंद्र स्वामी महाराज हैं. आज भी सोमवार से महाराज हमको क्लास ले रहा है. सो महाराज के बारे में परिचय तो ऑलरेडी हो गया. अभी मैं देखता हूँ महाराज तो आ गया क्या नहीं है. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna. Yes, Maharaj has already joined. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Maharaj, please accept our humble obeisances, Maharaj. So I was just giving introduction about you, Maharaj. Since we already introduced you, so I will just take 1 minute, Maharaj. तो हम महाराज के बारे में ऑलरेडी परिचय कर दिया, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे. आज एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के महाराज को आवाहन करेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और टू यू महाराज. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Diraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Te Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarani. So are we on verse 9 through 12, I think? Maharaj, 13 to 16. 13. Prabhu, 9 or 12, we did not read yesterday, I think. Okay, Prabhu, then 9 to 16 we will cover today. Maharaj? Okay. Thank you, Maharaj. I don't remember reading it, but it's all these opulent descriptions. Vanchakalpatrubhyascha kripasindubhyascha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vistav dan vidruma stambhaya vidurya palakotamai indranila maya kudyaya jagatya chahata dvisha vitanayar nirmitas twastra mukta dhamma vilambiti dantayar asana paryankayar manyutama pariskritai dasi bir niska kanti bi sa vasu bir alankritam kumbir sa kanchukashni sha Subhastra Mani Kundalai Ratna Pradipa Nikada Jyotibir Nirasta Dvantam Vichitra Valabhishu Shikandinonga Nityanti Yatra Viti Taguru Dupam Akshaya Niryantam Iksha Gana Budaya Unmadanta. Supporting the palace were coral pillars, decoratively inlaid with Vaidurya gems. Sapphires bedecked the halls, and the floors glowed with perpetual brilliance. In that palace, Twasta had arranged canopies with hanging strands of pearls, and there were also seats and beds fashioned of ivory and precious jewels. In attendance were many well-dressed maidservants, bearing lockets on their necks, and also armor-clad guards with turbans, fine uniforms, and jeweled earrings. The glow of numerous jewel-studded lamps dispelled the darkness in the palace. My dear king, all the ornate ridges of the roof danced loudly, crying peacocks, who saw the fragrant aguru incense escaping from the holes of the lattice windows and mistook it for a cloud. Krishna Maharaj, accept my humble obeisances. अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा गए श्रील प्रभुपाद और शिष्यों की जाए। महल को साधने वाले मूंगे के खंभों में वैदुर्य मणि जड़े थे, दीवालों पर नीलम जड़े थे और फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वस्ता ने चंदोवे बनाए थे जिनसे मोती की लड़ें लटक रही थी। आसन तथा पलंग हाथी के दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक सुवस्त्र भूषित दासियां थी जो अपने गलों में
लॉकेट पहने थे। साथ ही कवचधारी रक्षक थे जो साफा सुंदर वर्दी तथा रतन जटित कुंडल पहने थे। अनेक रतन जटित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहक रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अगरू को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। हरे कृष्ण। Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Naya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tachena Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Says, Prabhupada writes, this is from Krishna book, there was so much incense and fragrant gum burning that the scented fumes were coming out of the windows. The peacocks became illusioned by the fumes, mistaking them for clouds, and began dancing jubilantly. There were many maidservants, all of whom were decorated with gold necklaces, bangles, and beautiful saris. There were also many male servants who were nicely decorated in cloaks and turbans and jeweled earrings. Beautiful as they were, the servants were all engaged in different household duties. The more description of this inconceivable opulence. Haribol. तात्पर्य वह शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों के बाहर आ रहा था। मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे वे उसे मेघ समझकर हर्ष नृत्य करने लगे थे। अनेक दासियों ने सोने के हार, चूड़ियां तथा सुंदर साड़ियां पहन रखी थी। अनेक दासों ने उत्तम कुर्ते, साफे तथा रतन जटित कुंडल पहन रखे थे। वे सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर थे और विभिन्न गृह कार्यों में संलग्न थे। हरे कृष्ण। Okay, again, inconceivable, but even if we go now to India and we see some of the palaces, even from the Mughal time, they were really opulent. You know, not quite like this, but much more than anybody could think of nowadays. There's a big delay. Haribol. हरे कृष्ण महाराज। I will try to translate, Prabhu. Hare Krishna. Is there anyone there to do translation? If not, Deepak Prabhu, can you do translation? प्रभु जी मैं प्रयास करता हूँ। Okay, Prabhu. Thank you very much. Sorry महाराज for delay. No, I'm getting echo from your side. प्रभु मेरी आवाज में एको आ रहा है? Now is it okay, Maharaj? Yeah, now it's okay. Thank you, Maharaj. Can we start again, Maharaj, if you don't mind? Maharaj? Anyway, it's interesting. There was so much incense, the smoke was, very thick. Nowadays, many devotees think incense is really bad and we shouldn't burn it. जो अगरबत्तियों का धुआं है इतना ज्यादा गहरा होता है, लेकिन आज के समय में सब डिवोटी भक्त लोग धुएं को थोड़ा इतना अच्छा नहीं समझते कि अगरबत्तियों का धुआं अच्छा नहीं है।
Of course, this was genuine, real high quality incense, not some of this chemical stuff. तो ये जो उसमें केमिकल जो रसायन रहते हैं इसकी मात्रा तो अच्छा नहीं समझा जाता. Remember when I was in Los Angeles and Prabhupada was there, they would burn every morning when they greet the deities, they had the charcoal and they would be burning frankincense or something like that. There was lots of smoke. Prabhupada liked it. मुझे याद है जब मैं लॉस एंजलिस में था तो प्रभुपाद सुबह सुबह वो चारकोल और इंसेंस को जलाया करते थे, उसका धुआं था, और प्रभुपाद उनको बहुत अच्छा लगता था. And still in Mayapur, I think they go around with a big cloud of smoke in the evening and then fill up the rooms and all the mosquitoes run away. अभी भी मायापुर में ऐसे सभी कमरों में धुआं जलाया जाता है जिससे जो मच्छर भाग जाते हैं. But this made the peacocks dance. There was many peacocks. उससे बहुत सारे मोर जो है नाचते हैं इस धुएं को देखकर प्रसन्न होते हैं. Many maidservants and with gold necklaces and bangles. बहुत सारी दासियां सेविकाएं जो सोने के आभूषण पहनती हैं. You won't find that so much anymore at all. Maybe even the richest people, the maidservants are not dressed like that. आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो बहुत सारी दासियां और सेविकाएं ऐसा पहनती हैं. But again, like people will say, well, this is just some story. But even if we look a few hundred years ago, we see a lot of opulence. लोग ऐसा सोचेंगे कि एक कहानी है, लेकिन अगर हम 100 साल पहले जाएं तो ऐसा होता था और ऐसा दिखता था. So they're trying to say that everything is getting more and better, but actually now the jewelry is so much plastic and हम ये कहना चाहते हैं कि सब अच्छा हो रहा है पहले से, लेकिन अगर आप जब आभूषण देखें तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से और प्लास्टिक के भी आ रहे हैं. and buildings are just made out of cement. इमारतें हैं जो सीमेंट की बन रही हैं. So we were reading the other day that the pillars were coral and ऐसा कुछ दिन पहले पढ़ा कि जैसे जो स्तंभ थे वो जो सीपियों के थे. So I think we can read the next few verses also. Just finish this description of this incredible palaces, and there were many palaces, not just one. हम उसका अनुवाद अभी आगे पढ़ते हैं तो देर बहुत सारे ऐसे महल थे, एक नहीं, देर वाज सो मेनी. Tasmin samana guna rupa vaya subesha dasi sahasra yutaya manusaram grihinyan vipro dadarsha chamara vajanena rukma dandena satpatapatim pari vijayantya. In the palaces that the learned Brahmins, in that palace, the learned Brahmin saw the Lord of the Sattvatas, Krishna, together with his wife, who fanned him with a gold-handled yak-tail fan. She personally served him in this way, even though she was constantly attended by 1,000 maidservants, equal to her in character, beauty, youth, and fine dress. अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद और शिष्यों की जाए. उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने सात्वत पति श्री कृष्ण को उनकी पत्नी के साथ देखा, जो सोने के मूठ वाली चामर से पंखा जल रही थी. इस तरह वे स्वयं उनकी सेवा कर रही थी. यद्यपि उनकी सेवा में निरंतर 1000 दासियां लगी थी, जो अपने निजी चरित्र, सौंदर्य, तारुण्य तथा सुंदर वेशभूषा में उन्हीं के समान थी. Tam saniriksha bhagavan sotita shri paryankata sakala dharma britam barishta anamya pada yugalam shirasa kirita justena sanjalir vishad asane swe. The Supreme Lord is the greatest upholder of religious principles.
Thus, when he noticed Narada, he rose at once from Goddess Shri's bed, bowed his crowned head at Narada's feet, and joined his palms, had the sage sit on his own seat. श्लोका नंबर 14 अनुवाद श्रील प्रभुपाद शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद शिष्यों की जाए। भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक हैं। अतः जब उन्होंने नारद को देखा तो वे तुरंत श्री देवी के पलंग पर से खड़े हुए, नारद के चरणों पर मुकुट युक्त सिर को नवाया और अपने हाथ जोड़कर मुनि को अपने आसन पर बिठाया। Tasya vinija charano tadapa samurdna vibraj jagat gurutamopi satam patirhi brahmanya deva iti yad guna nama yuktam tasyaiva yach charana socham sheshatirtam. The Lord bathed Narada's feet and then put the water on his own head. Although Lord Krishna is the supreme spiritual authority of the universe and the master of the devotees, it was proper for him to behave in this way, for his name is Brahmanya Dev, the Lord who favors the Brahmanas. Thus Krishna honored the sage Narada by bathing his feet, and even though the water that bathes the Lord's feet becomes the Ganges, the ultimate holy shrine. श्लोका नंबर 15 अनुवाद प्रभुपाद शिष्यों के द्वारा प्रभुपाद शिष्यों की जाए। भगवान ने नारद के चरण पखारे और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के परम गुरु हैं तथा अपने भक्तों के स्वामी हैं, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि उनका नाम ब्राह्मण्य देव है, अर्थात ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस तरह श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। यद्यपि भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम तीर्थ है। Purport. Since Lord Krishna's own lotus feet are the source of the most holy Ganges, the Lord did not have to purify himself by bathing Narada Muni's feet. Rather, as Srila Prabhupada explains, Lord Krishna in Dwarka enjoyed the pastimes of a perfect human being. When therefore he washed the feet of the sage Narada and took the water on his head, Narada did not object, knowing well that the Lord did so to teach everyone how to respect saintly persons. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा प्रभुपाद शिष्यों की जाए। चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सर्वाधिक पावन गंगा के उद्गम हैं, अतः नारद मुनि के चरण पखार कर भगवान के लिए अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक नहीं था। प्रत्युत जैसा कि श्री प्रभुपाद बतलाते हैं, द्वारका में भगवान कृष्ण पूर्व मानव की लीला का आनंद ले रहे थे। अतः जब उन्होंने नारद मुनि के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया तो नारद ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि भगवान ने हर एक को ये शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है कि किस तरह संत पुरुषों का आदर किया जाता है। Yeah, so Krishna says that, he doesn't have to do anything, but still he works. Because if he didn't work, then the whole world would fall into ruination. So he lived as a perfect householder and showed people how to live. भगवान कृष्ण को ऐसा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। अगर वो फॉलो भगवान कृष्ण करेंगे तो सभी उनको देखकर ऐसा करेंगे। And he was, normally a person with so much opulence would not pay much attention to any guest that comes. साधारणतः कोई आदमी जो ज्यादा धनवान होता है वो किसी मेहमान के आने पर ऐसा व्यवहार नहीं करता है। But we know Krishna, he even welcomed Sudama, who was a very poor Brahmin, came in looking very poor, old clothes, and very weak and skinny from not eating. But Krishna greeted him in the same way as he greeted Narada Muni. हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने सुदामा ब्राह्मण का भी ऐसा स्वागत किया था, जो कि बहुत गरीब था, अत्यंत दुर्बल था। जैसा स्वागत भगवान ने नारद मुनि का किया, वैसा ही सुदामा ब्राह्मण का किया।
So going back to the description, like it says, there were bedsteads with silk canopies with strings of pearls and all these, amazing things. जैसा कि डिस्क्रिप्शन जैसा कि बताया गया है कि सुंदर महल थे, सोने के लंगों के बिस्तर बने हुए थे, तो वेल्थ को बताया गया है. Now the canopy will mostly be a mosquito net. अभी जो ऊपर का छत्र नहीं होता, मच्छरदानी होती है. And we have flies and mosquitoes flying around instead of peacocks and birds singing and everything. आजकल मच्छर मक्खी होते हैं, पहले जो है मोर और सुंदर पक्षी हुआ करते थे. But Krishna worked to set the example. He was living as a king. भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो ऐसे राजा की तरह रहते थे वहां पर. But he wanted to teach everyone they should honor the saintly people, the brahmanas. तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे हमें ब्राह्मण और साधु का स्वागत करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए. Narada Muni is no ordinary brahmana. मुनि कोई एक आम ब्राह्मण नहीं है, मुनि नहीं. But Krishna, like that other time when he met with Yudhishthira, they were both on chariots, and Yudhishthira was jumping down to pay obeisances to Krishna, because Yudhishthira is worshiping Krishna as the Supreme Lord. भगवान कृष्ण को सभी जो वहां पर उपस्थित लोग थे एक सब सर्वश्रेष्ठ भगवान की तरह पूजा करते थे. But before he could even get down, Krishna was paying Dandavat obeisances to Yudhishthira, because Yudhishthira was the emperor and Krishna was playing the role of a subordinate king. भगवान जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर आए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनका भी स्वागत किया. बिफोर वो रथ से उतरते, भगवान कृष्ण ने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया. And they had etiquette, so like when Krishna would meet Yudhishthira, he would pay obeisances. With Arjuna and Bhima, he would hug them. They were like the same age, more or less. भगवान ने शिष्टाचार का पालन किया. इवन अर्जुना और भीमा को गले लगाकर उनका स्वागत किया. And Nakul and Sahadev would bow down to Krishna. They were much younger. नकुल और सहदेव भगवान से छोटे थे, तो उन्होंने झुककर भगवान को नमस्कार किया. So we can learn, and we try to make our worship of Krishna opulent. हमें सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे शिष्टाचार का पालन किया. But Prabhupada said, don't use real jewels and gold because it just attracts thieves in Kali Yuga. If they find out you have gold and jewelry and real diamonds and everything, then the thieves will come. प्रभुपाद ने कहा कि असली सोने जवाहरात के चांदी आभूषणों का नहीं पहने, क्योंकि ये पहनने से ये चोरों और चक्कों को आकर्षित करते हैं. I remember in one of our temples in India, if it was Vrindavan or Bombay, they started out, they had all silver plates, for offering. मुझे याद है बॉम्बे में एक मंदिर में चांदी की थाली में खाना परोसना शुरू किया. But they got stolen a couple times, so they switched to steel plates, brass. काफी बार पता लगा वो चोरी हो गई, फिर दोबारा स्टील की थालियों में खाना परोसना स्टार्ट किया. So this Kali Yuga, the opulence is, of course, simplicity is another opulence. इस कलयुग में सिंपलिसिटी, सादा जीवन एक अनदर opulence है. The gopis, they weren't attracted when they saw Krishna at Kurukshetra and all this opulence, and they weren't attracted to them. जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा, अभी इतनी ओपुलेंस वेल्थ के साथ, धनवान के साथ, तो गोपियां इतना आकर्षित नहीं हुई. They wanted the cowherd boy Krishna, decorated in forest flowers and
playing in the forest with his friends and the flute and the cows. गोपियां ने भगवान कृष्ण को ऐसे कावहर्ड बॉय लड़के की तरह देखा, ग्वाले की तरह जो फूलों की माला और जंगलों के फूलों से सजे हुए रहते थे. So in other places later, it describes Krishna's activities, how he was setting the perfect example of a householder. तो कई जगह ऐसा प्रदर्शन हुआ है जहाँ भगवान कृष्ण एक गृहस्थ की तरह उन्होंने गृहस्थ के नियमों का पालन किया. He would rise early and get out of bed even though the wives wanted him to stay. भगवान कृष्ण सुबह जल्दी उठ जाते थे और इवन उनकी पत्नियों के सोने से पहले ही सो जाते थे. And he would take bath, he would do all the rituals, everything that householders do. वे स्नान करते थे और सभी नियमों का पालन करते थे जो एक गृहस्थ नियमों का पालन करता है. And then he would meditate on himself. फिर भगवान अपने ऊपर तपस्या करते थे. He said that because he's the Supreme Lord, there's nothing else for him to meditate on. भगवान वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ भगवान है, किसी और पे तपस्या नहीं करते. The first yoga teacher I went to, he was Dr. Arya. He was an Indian Sanskrit professor, but he was teaching yoga. मैं एक डॉक्टर आर्य से मिला जो संस्कृत टीचर थे और योगा सिखाते थे, योग करते थे. And he was telling us about Krishna. वो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे थे. Krishna meditated on himself. कि कृष्ण अपने ऊपर ध्यान करते थे. So he said, we should follow Lord Krishna and you should meditate on yourself. वो बोलते थे कि हमें भगवान कृष्ण को अनुसरण करना चाहिए और अपने आप पे ध्यान लगाना चाहिए. So he gave us the mantra, Soham, Soham, I am. उन्होंने एक मंत्र दिया, सोहम सोहम, मैं हूँ. I didn't like that very much. It didn't make sense, but I didn't understand. But now we understand that we're supposed to meditate on Lord Krishna. Like Krishna meditated on Krishna, we meditate on Krishna. We don't meditate on, because he meditated on himself, I should meditate on myself also. That's the Mayavadi. मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बनता है. लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हमें भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि यही भगवान भी यही करते थे और ये इसका कुछ मतलब बनता है. ये सब मायावादी फिलॉसफी है, अपने आप पे ध्यान लगाना. So Lord Chaitanya's mercy, he's given us a very simple and most effective way to meditate on Krishna. भगवान चैतन्य ने अपनी दया से हमें ये मंत्र दिया जिससे हम भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकें. Of course, there's many ways, but basically based on the chanting of the holy name. इसका आधार जो है हरे कृष्ण महामंत्र पे चैंटिंग करना है. But then we have the deity, we have Krishna's pastimes. हमारे पास भगवान के अर्चा विग्रह हैं और भगवान की लीलाएं हैं. And then Srila Prabhupada has kindly given us so much service, because people they have an impersonal conception, so they can't think, how can you serve God? तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें शिक्षाएं दी और उन्होंने देखा कि हम किस तरह भगवान का ध्यान कर सकते हैं. तो भगवान की लीलाएं, भगवान के अर्चा विग्रह दिए श्रीला प्रभुपाद ने. They can't understand the Achintya Veda Veda Tattva, that Krishna can be the biggest and the smallest. और अचिंत्य भेदा फिलॉसफी नहीं समझ सकते, तो प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया. He's expanded all over the universe, but he's also present in the form of the deity or the holy name. He's in the heart of everyone. भगवान ने सभी ब्रह्मांडों में विस्तार करते हैं और उसी सेम समय में ही भगवान हम सब में अपने अर्चा विग्रह में उपस्थित हैं और हम जीवों के serve Krishna by serving devotees. तो भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं उनके भक्तों की सेवा करके. Serving Guru. गुरु की सेवा करके. Guru is pleased when we serve devotees.
तो गुरु प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा करते हैं. No, we usually mention today is the disappearance day of Lokanath Das Goswami. आज लोकनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है. He was intimate associate of Lord Chaitanya. वे भगवान चैतन्य के क्लोजेस्ट साथी थे. He was one of the first ones to go to Vrindavan. वो सबसे पहले थे जो वृंदावन गए. Lokanath and Bhugarbha Goswami were the first ones to go to Vrindavan. Lord Chaitanya sent them. लोकनाथ और दत्त गोस्वामी जो पहले व्यक्तियों में थे जो वृंदावन गए थे. He said he would never initiate anyone. He was so humble. वो इतने ज्यादा उदार थे कि उन्होंने बोला मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता. But Lord Chaitanya forced him to initiate Narottam Das Thakur. भगवान चैतन्य ने उनको फोर्सफुली बोला कि तुम नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दो. And that's another story, but he was refusing. He's saying Narottam is already more advanced than him. ये एक अलग कहानी है. वो मना इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि नरोत्तम दास मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, शिक्षित है. Narottam actually looked like Lord Chaitanya. नरोत्तम दास ठाकुर भगवान चैतन्य की तरह दिखते थे. After he bathed in that lake where Lord Chaitanya had left his prema, Narottam, who was dark skinned, but he came out golden. भगवान चैतन्य ने जहाँ स्नान किया एक झील में, जब नरोत्तम दास ठाकुर ने वहां स्नान किया तो जब वो बाहर आए तो उनका स्किन पहले सांवला था लेकिन आने के बाद गोल्डन जैसे भगवान चैतन्य जैसा सुनहरा हो गया. But Lord Chaitanya had instructed. So anyway, Narottam or Lokanath was refusing out of his humility. और भगवान चैतन्य की निर्देश के विपरीत वो बिकॉज बहुत हम्बल थे और दीक्षा देने से मना कर रहे थे. So Lokanath would serve him, but he didn't know. He would go in the, Vrindavan was all forest, but he would go back in the forest for his morning ablutions. लोकनाथ चैतन्य की भगवान चैतन्य की सेवा करते थे लेकिन वो वापस जाते थे जहाँ पर चैतन्य महाराज जो है उन्होंने अपना नित्य कर्म करते थे. And Narottam would go and clean up everything and carry the stools and everything far away. गौतम दास ठाकुर उस स्टूल को मल को वहां से साफ करते थे, उसको वहां से उठा के ले जाते थे. So Lokanath noticed that, so he hid one time, was watching who was doing this. लोकनाथ ने एक बार ये देखा और ही वह चकित थे कि ऐसा कौन कर रहा है. So then when he saw this humility of Narottam, who was coming from a royal family and, and so much mercy of Lord Chaitanya, then he agreed to initiate him. उन्होंने देखा राजसी परिवार से आते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके ऐसे आचरण से वो प्रभावित हुए और उन्होंने उनको दीक्षित देने का मन बना लिया. So he was very important. He found many pastime places of Lord Chaitanya. उन्होंने भगवान चैतन्य के बहुत सारे लीलाओं के स्थानों को ढूंढा. He wrote many songs. उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे. But he's most known for this, being the guru of Narottam Das. और नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे. So we can pray for his mercy, have this kind of humility. हम उनकी दया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. And going to Vrindavan then was very austere. वृंदावन जाके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. But he lived there, and all right. So we devotees
are not looking to live opulently like Krishna. We're satisfied to provide nicely for Krishna. तो भक्त हैं वो ओपनली रहने की इच्छा नहीं करते हैं, But not that we can't live comfortably. या परंतु हम एक खुशी से रह People, to be a devotee, have to give up everything. जरूरी नहीं है कि डिवोटीज भक्त को सब कुछ छोड़ना है, But that's not the case. You just have to give up the idea that I'm the proprietor. हमें सिर्फ ये विचार त्यागना है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ. That's the illusion. That we thinking this is mine, it is I and it is mine. ये विचार अच्छा नहीं है कि ये मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ. But it's Krishna's. ये सब भगवान कृष्ण का है. Krishna is a Sarvaloka Maheshwara. He is the Lord over everything. कृष्णा इज सर्वलोक महेश्वर, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है. So this Isha Vasyam Idam Sarvam, that everything belongs to Krishna, everything in the universe. इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है भगवान कृष्ण का है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है. So everyone should know that and offer everything to Krishna. Know that whatever we have, it's on loan from Krishna. इस बात का हम सबको पता होना चाहिए और हमें ये भगवान हर वस्तु को भगवान को ही अर्पित करना चाहिए. We have to take responsibility for it. हमें इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए. And take care of everything nicely, whatever family we have, or in service we have. और हमारे पास जो भी है You have to do it like Krishna. We have to honor everything. Thank Krishna. और हमें हर वस्तु का सम्मान करना चाहिए. Be grateful. Krishna is grateful for the great qualities. हमें भगवान कृष्ण का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ हमें दिया. And it's very important attitude to be grateful. ये बहुत ही उत्तम भाव है कि हमें भगवान के इन चीजों के प्रति भगवान का आभारी होना चाहिए. For whatever thing is spiritual master to try to pay back. कृष्ण महाराज, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस इज कमिंग. There's nothing from here though. Oh, yeah. Something happened. Okay. So we want to be grateful. Means pay back. हम भगवान के प्रति आभारी होना चाहते हैं और वापस देना चाहते हैं. That means to give whatever the Guru has given us, we try to give it to him. गुरु ने जो हमें दिया हम उसको वापस देना चाहते हैं. And then Krishna, we can never pay back completely, but spiritual master will accept that. हम सब कुछ तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो उनके अनुसार चलते हैं. And what have we been given? We've been given the holy name, and Prabhupada has arranged association of devotees for everybody. हमें भगवान का पवित्र नाम और प्रभुपाद ने हमें सभी भक्तों का साथ दिया है. That's why in the principles of tomorrow is the day of the registration of ISKCON as a society in New York. And Prabhupada made these 7 principles and to bring people together, to bring the devotees together to share their realizations about Krishna and to read the books and distribute the books and to educate everyone. कल प्रभुपाद जी ने ISKCON को रजिस्टर किया था, वो दिन है, तो उस दिन सभी भक्तों को बुलाया जाएगा और जो है अपने अनुभव को शेयर करेंगे. Okay, so let's see if we have any comments or questions.
धन्यवाद। महाराज कह रहे हैं कोई प्रश्न है उसके लिए आमंत्रित करेंगे। महाराज क्षमा करना। Forgive me, Maharaj, if I made any mistake. This is the first time I have done this translation seva. Hare Krishna. I wouldn't know. It sounded good to me. Thank you, Maharaj. Other devotees. I don't know the language enough to know. Lokanath Goswami also, he has his deity. लोकनाथ स्वामी महाराज के भी अपने अर्चा विग्रह थे। They were going and, trying to find these lost places of Krishna's pastimes. भगवान कृष्ण के जो भी लीलाओं के स्थान थे वो वहां जाते थे। So he made the Radha Gokulananda temple. That was his deity. उन्होंने राधा गोकुल आनंद मंदिर का निर्माण किया। And that deity just came to him. ये अर्चा विग्रह उनके पास आए थे। And here's another one. We had the Gopal Bhatta the other day, that when Krishnadas Kaviraj asked for blessings to write to Chaitanya Charitamrita, he said, don't mention me in it. He didn't want to be glorified. कविचंद्र गोस्वामी इन्होंने भी लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि मेरा नाम मत लिखो, मैं ये प्रसिद्धि नहीं पाना चाहता। And that deity just appeared to him too. He just found him somewhere. अच्छा विग्रह भी उन्हें कहीं मिले थे, अपने आप में उनको प्राप्त हुए। Okay, so let's see what we have. Questions? Hare Krishna, His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki Jai. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful nectarian pravachan. Hare Krishna devotees, is there anyone has any doubts? Please unmute your mics and you can ask your questions. Maharaj, you will take class tomorrow also, Maharaj? No, tomorrow I can't. I have another class. Okay, Maharaj. Thank you. And the temple that Lokanath made was Radha Gokulananda. His deity is Radha Vinod. And he had a strong desire to worship a deity, and the Krishna just appeared and said, worship the deity here. नाथ स्वामी जी ने जो अर्चा विग्रह बनाए उनका नाम था राधा विनोद। उनकी इच्छा थी उनका सेवा करने की। And Narottam wrote a prayer. I worship the lotus feet of Lokanath Prabhu. नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत लिखा जिसमें लिखा है कि मैं लोकनाथ प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। The son of Padmanabha. जो पद्मनाभ के पुत्र हैं। He is the storehouse of single-minded service to the lotus feet of Radha Vinod. जो राधा विनोद अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहते हैं। Okay. Hare Krishna Maharaj. Yeah. Pranam. Maharaj, a slightly unrelated question, but would you be able to tell us one pastime of Srila Prabhupada which you had able to witness for us to enjoy? Well, I witnessed some. I didn't have like personal relationship interchanges, but I did watch because I was walking on morning walk sometimes, and Prabhupada coming. And one thing was this: he would come down from his room in Los Angeles after the morning walk to greet the deities. तो महाराज बता रहे हैं कि सुबह सुबह भ्रमण के लिए श्रील प्रभुपाद जाते थे, तो कभी वो भ्रमण के सुबह के बाद भ्रमण के लिए निकलते थे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। He was always exactly on time. वो एकदम समय पर जाते थे।
So one morning, I was actually helping on the altar that morning, एक सुबह मैं अर्चा वेदा की सेवा कर रहा था and they were putting a lot of new flowers. नए नए फूल लगा रहा था And we're a little bit behind the schedule, so the Gornitai altar, the floor in front was full of flower stems and everything. हम समय से पीछे चल रहे थे बोनिताई का जो अर्चा विग्रह है उसके सामने बहुत सारे फ्लावर बहुत सारे फूल थे And the time came and Prabhupada, he knocked on the door of the altar. जैसे ही समय हुआ प्रभुपाद जी ने दरवाजे को खटखटाया So the temple president, oh, Prabhupada's knocking. So we took a broom and we just pushed everything to the next altar and opened the door for Gornitai. जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने फटाफट झाड़ू से सब फूल एक तरफ कर दिए और मंदिर का अल्टर का दरवाजा खोल दिया And Prabhupada bowed down and we pushed it away from Radha Krishna and somehow got it so that he could greet all the deities. But he knocked on the door, when they weren't opening exactly on time. प्रभुपाद जी ने चुप कर राधा कृष्ण का अभिवादन किया तो प्रभुपाद हमेशा समय पे आते थे तो उन्हें कभी दरवाजा खटखटाने का जरूरत नहीं पड़ता Then one time, I was sitting in the garden at night, and that was kind of intimate. There weren't so many devotees there. एक बार शाम को उद्यान में बैठे थे बहुत सारे भक्तों के साथ At that time, the terrorists would hijack an airplane and make it go somewhere else, to their country. उस समय ऐसी घटनाएं हुई थी कि आतंकवादी किसी जहाज को हवाई जहाज को उठा किडनैप करके किसी और जगह ले जाते थे And one sannyasi was telling Prabhupada how at some airport they took his danda and they unwrapped it and took it all apart. एक सन्यासी जो है प्रभुपाद को ये घटना बता रहे थे कैसे एयरपोर्ट हवाई ऐसा हुआ था And Prabhupada said, but they never get the hijacker. And he laughed. They can take the sannyasi's danda, but they never catch the hijackers. They get on the plane with a gun. प्रभुपाद बोल रहे थे कि उन्होंने हवाई जहाज को हाईजैक किया पर उनको कभी सन्यासी नहीं मिला Then the airport, in Los Angeles, the airplanes fly over, and the airport's not so far away. लॉस एंजल्स में जो हवाई जहाज जाता था एयरपोर्ट इतना दूर नहीं था वहां पर And sometimes it's quite loud. And so then Prabhupada said, Krishna has much better airplanes. और वो जो हवाई जहाज है बहुत शोर करता था तो प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान कृष्ण के पास इससे ज्यादा अच्छे विमान हैं And the birds. ये पक्षी हैं He said, even there's some birds so big it flies from one planet to another. तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये पक्षी कुछ पक्षी इतने बड़े हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकते हैं But it's just nature is so amazing. I was saying how all these different things, if we try to see how opulent nature is and how then we can have some understanding how Krishna can be so opulent. ये प्रकृति कितनी अद्भुत है अगर हम प्रकृति को समझें तो प्रकृति में बहुत सारी वैभव Scientists took some not very big bird in Finland and they put some kind of a transmitter on the bird. तो वैज्ञानिकों ने फिनलैंड में एक बहुत बड़ा पक्षी देखा और उस पे उन्होंने कुछ ट्रैकर या ट्रांसमीटर लगाए And that bird flew all the way to South Africa. वो जो पक्षी था साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका तक उड़ कर गया It's like a straight line, except where there was a big waterway went around it, flying hundreds of miles every day. तो वह सीधी रेखा में गया जहां पर पानी था उसको छोड़कर तो इतने hundreds of miles तक वो उड़ कर गया So anyway, Prabhupada was saying like that. The one I really remember was, and we're reading Krishna book to him. मुझे याद जो प्रभुपाद बताया करते तो मुझे याद है एक बार कृष्णा बुक पढ़ रहे थे
And it was this Dravida gorilla. वो एक गोरिल्ला था And Prabhupada, he was fascinated. He was watching, his eyes got really big. He was describing Dvivida gorilla, you know. प्रभुपाद अपनी आंखें धो रहे थे और गोरिल्ला को डिफाइन कर रहे थे उसका रूप And it was saying how Dravida, he would go into the ocean and, you know, go like this. गोरिल्ला सागर में जाता है और पानी के साथ खेलता है And he was so powerful that that would make like tsunamis. वो इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता है कि सुनामी आने वाली है। And then there's a little pond in the garden. It's a fountain. It's about this big. और उद्यान में एक छोटा तालाब था उसमें भक्त जाते थे उसमें And Prabhupada, he said, just like we can make the water in that thing splash and go out, you know, if we do that. जैसे हम पानी में जाके ऐसे पानी के साथ छींटे करते हैं तो वैसा वो सागर में करता था I can't imitate, but Prabhupada, you've seen pictures, sometimes his eyes would become so big. So his eyes became really big. तो मैं उनकी नकल तो नहीं कर सकता लेकिन प्रभुपाद जो है उनकी आंखें कभी-कभी इतनी बड़ी हो जाती थी वो दिखाते थे He said the whole ocean could stir up the whole ocean, just like we can stir up a little pond. Not even a pond, just a little fountain. बोले कि वो पूरे सागर को पूरा हिला देता है जैसे हम तो खाली एक छोटे से तालाब या छोटे से उसको हिला सकते हैं अपनी हरकतों से Anyway, morning walks, Prabhupada walked very fast. It was hard to see if his feet were really touching the ground. He walked effortlessly, but went very fast. तो प्रभुपाद सुबह की जो वॉक होती थी उसके में बहुत फास्ट चलते थे ऐसा जोर लगाते थे लेकिन ऐसा लगता था कि बिना किसी प्रयास के वो बहुत तेज चल रहे हैं And it's important to listen to these morning walk recordings because it shows he was very relaxed and friendly with the devotees. सुबह की जो यात्राओं की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको सुनना बड़ा अच्छा है क्योंकि प्रभुपाद उसमें बहुत शांत और बहुत ही डिवोटी के साथ खुलकर बात करते थे One time in Vrindavan, there was a Indian, I don't know exactly sadhu, but a local, he was walking along with us. एक बार भारत देश में कोई वहाँ का लोकल साधु उनके साथ And I think he was saying this, Madhava Seva, Manava Seva, Madhava Seva. If you were to serve man, you serve God. तो ये बोल रहा था कि मानव सेवा मानव धर्म यानी अगर तुम व्यक्ति की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा के बराबर That's the opposite of the Bhagavatam, is you water the root and the tree grows. Right? ये भागवतम के बिल्कुल विपरीत है जिसमें हम जड़ को पानी देते हैं और तो वृक्ष So Prabhupada was very friendly with this man, प्रभुपाद उनके साथ बड़े खुले हुए थे respectful. So there was a big tree. At that time on the road, that Bhaktivedanta road, there was all trees. Now it's all buildings and forest is gone, but it's all big trees. तो प्रभुपाद उनको इज्जत दे रहे थे और उस समय भक्ति वेदांत मार्ग पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे Prabhupada said, "You see that tree? प्रभुपाद ने उनको बोला देखो ये बहुत बड़ा वृक्ष है He said, "Could you water every leaf on that tree?" तो तुम क्या हर पत्तियों को पानी दे सकते हो And the man said, "No, I couldn't do that." वो आदमी बोला नहीं दे सकते And Prabhupada laughed. He said, "Even if you could, it wouldn't help the tree to water the leaves." तो प्रभुपाद जी ने हंसते हुए बोला अगर तुम पत्तियों को पानी दोगे तब भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा And he just said, "Don't worry, you have Gandhi disease, and we'll cure you." प्रभुपाद जी ने बोला चिंता नहीं करो तुम्हें गांधी बीमारी है So anyway, it's everything now. There's so many recordings, and you can really
see how Prabhupada reciprocated with everybody. So many books. बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने भक्तों के साथ विचारों को आदान प्रदान किया. All right, so you want pastimes of Prabhupada, we have the Leelamrita, we have so many books now, and they keep coming. प्रभुपाद की जो लीलाएं हैं वो शिला प्रभुपाद लीलामृता और बहुत सारी. And because a few devotees, not very many, they were able to be with Prabhupada all the time for a year or 2 years. As a secretary or a servant. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for enlightening us with your wonderful class and your experience with Prabhupada. I think there are no questions, Maharaj. Thank you very much. And the whole week you have been with us, and your classes were so amazing, Maharaj. We are really feeling blessed, Maharaj. I don't know. Thank you very, very much. Bhagavatam, you're all amazing audience, so that's it. Thank you, Maharaj. How many did we have today? Today there were more than 60, Maharaj. Now there are 53. Some people left for office, Maharaj. Okay, so Dhanyavad. Srimad Dhanyavad, Bhagavatam. Maharaj. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Find Lokanath Das mentioned in Chaitanya Charitamrita. It's his request. Just write about Lord Chaitanya, in other words. All right. Bye-bye. Yes, Maharaj. Hare Bye bye, Krishna. Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Maharaj, I would request Jai Govinda Das Prabhu to speak to you and tell a few words, Maharaj. Hare Jai Krishna Govinda Maharaj, Prabhu, Hare. please accept my humble obeisances. Yeah. Thank you so very much, Maharaj. We had 2 weeks of blissful association with you, and we had so many classes. Last Friday was also amazing. Yourself and His Holiness Bhakti Vikas Maharaj really blessed us. We had a wonderful association with both of you. And please forgive us, Maharaj, if we have committed any offenses in taking care of you or any shortcomings from our end. On behalf of Damodar Desh, we seek your blessings, and please excuse us for any offenses we have committed. Thank you so much, Maharaj. And please coming and giving your wonderful association and blessings also. Please bless me that I can be worthy of all your transcendental vision. Hare Krishna, Maharaj. Yeah. And become like Swami. All right. Thank you all very much. I'll probably leave on Saturday, so that's the end. His Hold on. Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna devotees. As Maharaj ji बोल रहे थे, आज लोकनाथ गोस्वामी महाराज का डिसअपियरेंस डे, उनका चरण कमल में हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे, हम भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े. और आज का क्लास मोहन प्रभु लेने वाले थे. एक लास्ट मोमेंट चेंज है. So Mohan Prabhu, we really seek apologies from you, and we could not able to communicate you also. Because Maharaj ne, just after the Mangala, he confirmed he will be taking the class. We are really big apology on behalf of NBS team. Hare Krishna. And so this Sunday, आने वाला Sunday है, it's एकादशी भी है, और वो दिन हमारा प्रोग्राम होगा सनमार्क स्कूल में. सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वहां पर आइए और भक्त को आसन कीजिए और अच्छा कीर्तन सुने और कथा भी सुने. हमारा बीच में होगा हिज ग्रेस अजितानंद प्रभु. थैंक यू. ओवर टू यू रसिकानंद प्रभु. थैंक यू जय गोविंद प्रभु. हरे कृष्णा. अभी हम प्रोग्राम विराम करने के पहले प्रार्थना करेंगे महाराज का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और चित्तहरि प्रभु का स्वास्थ्य के लिए और
हर ग्रेस परिपूर्ण राधा देवीदासी माता जी के लिए और हम सभी भक्तों का आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई और है प्रभु, कुछ और किसी और के लिए प्रार्थना करना है? ओके, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम इस प्रोग्राम विराम करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी को, अभी विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।